नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे बीएनबी की। देखिए, कुछ तो पकड़ा है बीएनबी में। और निर्मला सीतारमण ने क्या बोला है आपके टैक्स को लेके, क्रिप्टो टैक्स को लेके, और क्या कोई फाइनेंशियल कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल साहब, पूरा एक स्पीच है उनका। मैं आपको वीडियो में जरूर दूंगा, उसको गौर से सुनिए, आपको सारी हकीकत मालूम पड़ जाएगी आगे आखिर क्या होने वाला है। तो पहले बीएनबी में थोड़ा सा आप डिस्कस करते हैं कि बीएनबी में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, पहले तो बीएनबी का जो प्राइस है वो आपका $242 के आसपास अभी चल रहा है। मार्केट आपका एज यूजुअल है, जो था जैसा है, यानी कि वही बीटीसी आपका $30,000 पे अभी भी चल रहा है। लेकिन बीएनबी में कुछ ना कुछ एक ट्रांजैक्शन बहुत गजब के चल रहे हैं और विड्रॉ किया जा रहा है दबा के। लगभग मान लीजिए 8-10 ट्रांजैक्शन हुए हैं और वो भी मिलियंस में हुए हैं। अब यहाँ दो चीज़ें होती हैं, या तो ये कहीं ना कहीं अभी आपने देखा जो अरखम था उसकी वजह से हो सकता है स्टेकिंग के लिए उस टाइम पे इसको बीएनबी को यहाँ लाया गया कि किसी तरीके से एलोकेशन ज़्यादा हो जाएंगे और उसके बाद अपना काम खत्म। तो वो तो आज आपका 19 तारीख है, तो कुल मिला के कल तक वो सारा का सारा मामला फिनिश हो चुका है, यानी एलोकेशन का भी आपका क्लियर हो गया है। तो यहाँ हो सकता है कि जैसे अब काम हो गया तो वहाँ से बीएनबी हटाया जा रहा हो, या कोई और भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पकड़ा है बीएनबी में। तो बीएनबी यहाँ अच्छा खासा जो है लगभग ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं अभी आउट हो रहे हैं, यानी कि बाइनेंस से बीएनबी निकल रहा है, यानी कहीं ना कहीं वॉलेट्स में जा रहा है या जो भी है। तो आप थोड़ा सा बीएनबी पर नज़र जरूर रखें, क्योंकि कुछ हो सकता है, क्योंकि अच्छे खासे ट्रांजैक्शंस हैं। मैं पूरी हिस्ट्री दे रहा हूं आपको, आप साइड में देख सकते हैं। दूसरा, इनका 24th क्वार्टर बर्न भी हुआ है और वो लगभग आप ये मान लीजिए 1.99 मिलियन के आसपास टोकन बीएनबी जो है बर्न हुए हैं। तो बर्निंग का तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बर्निंग तो चलती रहती है। और लेकिन जो ट्रांजैक्शन है ये आउटफ्लो है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच में डालता है कि आखिर ऐसा क्या है, वेल इतना एकदम से क्यों इतनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है बाहर निकाल रही है एक्सचेंज से। तो आप थोड़ा सा बीएनबी पर ध्यान रखिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। देखिए साहब, मैं आपको थोड़ा सा समरी देता हूँ। समरी ये है कि देखिए 18 तारीख से उन्होंने साफ क्लियर कर बोल दिया है कि साहब फाइनेंशियल क्राइम माना जाएगा अगर आप टैक्स को चोरी करते हैं। तो ये फाइनेंशियल क्राइम, और जो इनकी ईडी है या और जो भी संस्थाएं हैं वो अब रेड डालनी शुरू करेंगी, यानी कहीं ना कहीं। और ये ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में हैं तो यहीं करेंगे इसका, और कहीं कोई जैसे बाहर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कोई कर रहे हैं और उसमें आप अगर बचे हुए हैं तो आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं भी किसी भी तरीके से अगर आप किसी वो कहते हैं शिकंजे में आ गए तो आपकी पूरी छानबीन होगी और आपका जो फाइनेंशियल क्राइम का पूरा एक तरह से केस चलेगा। दूसरा, आपका मनी लॉन्ड्रिंग भी माना जाएगा उसमें। तो ये पूरा उन्होंने एक डिटेल में इसी तरीके से बोला है सारा। तो यहाँ सीधी सी बात घुमा के आ जाती है कि आप कहीं भी ट्रेड करो, चाहे इंडिया में करो, इंडिया से बाहर करो, टैक्स दो तो ज़्यादा बेहतर है भाई। देखिए, नहीं दोगे तो मे भी आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ G20 की मीटिंग में ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी और ये एक ऐसा कंसेंसस बनाया जाएगा कि भाई कहीं का भी कोई भी ट्रेड हो तो उसमें आपस में वो जानकारी साझा की जाए। यानी हम मान लीजिए यहाँ से कोई ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड करता है तो इंडिया से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो इंडिया का बासिंदा है और वो इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज करता है तो इसलिए ऐसी जानकारी भी साझा की जाए। तो ये निर्मला सीतारमण का पूरा का बयान है। मैं आपको पूरी क्लिप दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। And participating in this very important symposium. It is a true honor to bring together this esteemed panel to build on the discourse on this important issue on combating tax evasion, corruption, and money laundering. Financial crimes such as tax evasion, corruption, and money laundering are intrinsically related to each other. For example, proceeds of crime of corruption could have been sourced out of tax evaded money generated through undisclosed transactions or fraudulent means. Proceeds from corrupt means are usually sought to be legitimized by criminals through laundering to escape the reach of law and law enforcement agencies. Furthermore, these financial crimes are also not limited to or restricted to jurisdictional boundaries. With the advancement in technologies and openness in international trade and commerce, criminals have started utilizing sophisticated measures to transfer illegal proceeds across borders through multi-layered transactions involving various forms of assets, including financial assets, crypto assets, and real estate.
It is imperative, therefore, that law enforcement agencies work in close collaboration with each other to detect and deter financial violations across multiple domains. To this end, it is important that the personnel of various law enforcement agencies are exposed to various facets involving the different statutes dealing with financial crimes so that the investigative synergies are better utilized. Furthermore, in order to fructify the work to strengthening international interagency collaboration, capacity building of officials working on financial crimes is also essential. In addition to increased cooperation between law enforcement agencies and enhanced capacity building, it is also imperative that we remain alive to the emerging risks of financial transparency. In this context, the progress of work towards the development of crypto asset reporting framework and the update to the common reporting standards is a welcome step. Besides these, we should also examine closely whether there are other classes of assets in respect of which information needs to be shared in a systematic way among jurisdictions. To this end, India welcomes the report of the OECD toward exploring the feasibility of exchange of information on a voluntary basis in respect of immovable property transactions undertaken by residents of a jurisdiction in foreign jurisdictions, which will help in initiating the discussion on this subject. During tax investigations, tax administrations acquire access to large amount of incriminating information obtained through tax treaties, which could have relevance for investigations in other financial crimes. However, the disclosure of such information to other domestic law enforcement agencies is subject to seeking consent from the foreign jurisdiction for the use of such information for non-tax purposes. In this regard, we welcome the recent report of the Global Forum that will assist interested jurisdictions to streamline the process involved in obtaining consent for the use of information obtained through tax treaties for non-tax purposes. The suggestions in the report would help to make the process of obtaining consent from foreign jurisdictions more efficient and speedy. In leveraging the interconnectedness of investigation in tax evasion, corruption, and money laundering, there is a scope for evolving solutions that can help tackle financial crimes in a more synchronized and effective way. The G20 has helped spearhead a number of reforms to the global tax, anti-corruption, and anti-money laundering architecture, which has helped shape the discourse towards jurisdictions not only adopting a more holistic approach to financial crimes, but also aided them to collaborate with one another. We hope that the G20 continues exploring the options to further strengthen the global architecture, to fight financial crime, and assist jurisdictions in enhancing their law enforcement capacity. Under the G20 presidency, India has taken the lead for building capacity in tax and financial crime investigation in South Asian region in collaboration with the OECD. As a first step to this initiative, it gives me immense pleasure to announce the launch of the pilot program on tax and financial crime investigation in collaboration with the OECD for the South Asian region starting from 18th July 2023 at the regional campus of the National Academy of Direct Taxes in New Delhi. We look forward to institutionalization of this collaboration and contribution of this initiative in addressing the specific needs of countries in the South Asian region. I would like to express our gratitude. पूरी क्लिप सुनी और आपको सारा का सारा मैटर समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको सिर्फ निचोड़ में यही कहूंगा, देखिए कहीं भी करो ट्रेड,
लेकिन टैक्स दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि ईडी या कोई और संस्था आपका दरवाज़ा खटकाए, भाई टैक्स क्यों नहीं दिया। तो ये क्या है कि G20 में ये सारी चीज़ें चलेंगी और ये देखिए जानकारी तो साझा की जाएगी। आप ये कहो कि G20 में जो रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे तो केवल इंडिया के लिए होंगे या केवल कोई और कंट्री है उसके लिए होंगे, ऐसा नहीं है। फिर जानकारी जो है आपस में एक्सचेंज जरूर की जाएगी, तो वहाँ फिर वो प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। तो बेहतर है टैक्स दो, बाकी आप खुद समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगता है कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।